Hello students, I'm Pavneet and welcome to my channel IELTS with Pavneet. Today we are going to discuss a cue card and that is describe a time when you were busy. Let's read the cue points as well. When did it happen? Where were you? What did you do? And explain why you were that busy. Now here you need to talk about a time when you were busy. So you can talk about a time when your exams were going on. On that time you were busy, or you can say that you were busy when you had to attend any social gathering like any party or any marriage. On that time you were busy in doing shopping. So you can talk about any particular thing or any particular time when you were busy. Okay, now let's read the cue card how we can talk about that. So we can say, as I'm a student, so it's not a piece of cake for me to have some spare time. Mind you, at this moment, I have decided to talk about a time when I was totally up to my ears in both studies and a celebration. So here I have started my answer by saying, as I'm a student. For those who are currently studying, they can say as I'm a student, but for those students who are not currently studying, they are working as well, they can say that as I am an employee, or if you have owned your own business, then you can say that as I am an employer or something like that. So here I have started my answer by saying as I am a student. So we can say as I'm a student, so it's not a piece of cake. Piece of cake mean when you are saying that it's very easy, or when you want to say that it's very easy, मीन जब आप कहना चाहते हो कि ये चीज़ बहुत ही ईजी है, there you can use it. Then I have used mind you. Try to use that if you want to really impress the examiner. If I'm not mistaken, when I was studying in college, on that time, I had to juggle the demands of both studies and a party. Actually, what exactly happened, my bosom friend got hissed. So my friends and I decided to have a wine and dine in a fancy restaurant with her. But my mates were totally perplexed, like which restaurant they should choose, and even they were totally unaware about the likes of Sonia. So here I said, if I'm not mistaken, students try to use that if you really want to get your desired band score, or if you really want to improve your score, try to use these kind of things. So यहाँ पर मैंने यूज़ किया if I am not mistaken. ये अपने कहाँ पर यूज़ करते हैं जब आपने कहना होता है I vividly remember, उसकी जगह पर आपने क्या यूज़ करेंगे if I am not mistaken. So मैंने कहा if I'm not mistaken, when I was studying in college, on that time I had to juggle the demands of both studies and a party. जगल द डिमांड, अब इसका मीनिंग अंडरस्टैंड करो, जब आपको दो चीज़ें एट द सेम टाइम पर करनी होती है. जैसे आजकल क्या हो रहा है, मेजॉरिटी ऑफ वर्कर्स को अपनी वर्क लाइफ तो मेंटेन करना ही होता है, साथ के साथ वो स्टडीज़ भी कर रहे हैं. तो उनको क्या करना पड़ता है, जगल द डिमांड्स ऑफ बोथ स्टडीज़ एंड देयर वर्क. या फिर अपने फैमिली को मेंटेन करना है तो बोथ फैमिली एंड वर्क, इस तरीके से करके बता दो. सो मैंने कहा आई हैड टू जगल द डिमांड्स ऑफ बोथ स्टडीज़ एंड अ पार्टी. देन मैंने बूजम फ्रेंड यूज़ किया, मे बी यू हर्ड दैट वन एज वेल. बूजम फ्रेंड मीन बेस्ट फ्रेंड. देन मैंने यूज़ किया गॉट हिस्ट. गॉट हिस्ट का मीनिंग होता है मैरिड होना. गेट मैरिड की जगह पर आप गेट हिस्ट करके यूज़ कर सकते हो, बट हियर आई हैव यूज्ड इन पास्ट फॉर्म, दैट्स व्हाई आई सेड गॉट हिस्ट. ओके. देन मैंने यूज़ किया वाइन एंड डाइन. वाइन एंड डाइन का मीनिंग होता है टू इंटरटेन समवन विद गुड फूड. किसी को इंटरटेन करना गुड फूड से, उसको अपने क्या कहते हैं, वाइन एंड डाइन. मतलब जब आप अच्छे खासे रेस्टोरेंट में जाते हो और वहाँ पर जाकर आप खाना पीना करते हो और अपने आप को इंटरटेन कर रहे हो, तो आप क्या कहोगे, वाइन एंड डाइन कहोगे. देन मैंने यूज़ किया फैंसी रेस्टोरेंट. ये आप एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट की जगह पर यूज़ कर सकते हो. Then I have used a vocabulary word and that is perplexed. It's mean when you want to say that confused. जब आप confused कहना चाहते. So, being a social butterfly, they had given me the responsibility of organizing the entire event. Meanwhile, I was totally tied up with my studies because my exams were going on and I was having butterflies in my stomach, as my parents gave me the deadline to pass my exam with flying colors. सो नाउ आई सेड सोशल बटरफ्लाई. ये अगर आपने लास्ट वाली वीडियो देखी होगी तो आपको ध्यान होगा, मैंने स्टार्टिंग में यूज़ किया था सोशल बटरफ्लाई. अगर स्टूडेंट्स आपको इसका मीनिंग ध्यान है, प्लीज़ डू राइट इन द कमेंट सेक्शन एज वेल. इसका मीनिंग लिखो ताकि मुझे पता चले कि आप इस वीडियो को अच्छे तरीके से देख रहे हो. देन मैंने कहा दे हैड गिवन मी द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑर्गेनाइजिंग द एंटायर इवेंट. मीनवाइल आई वॉज टोटली टाइड अप विथ माई स्टडीज़. अभी अगेन अपनों बिजी का अल्टरनेटिव यूज़ कर दिया, आई वॉज टोटली टाइड अप. लास्ट में अपनों यूज़ किया था आई वॉज टोटली अप टू माई ईयर्स इन वर्क. अगेन अपने जब बिजी कहने जा रहे हो आप क्या ये कह सकते हो, आई वॉज टोटली टाइड अप विद माई स्टडीज़. देन मैंने यूज़ किया बटरफ्लाइज इन माई स्टोमक. इसका मीनिंग होता है जब आपने कहना होता है आप नर्वस हो रहे हो.
नर्वस की जगह पर आप कह सकते हो, जैसे आप कह रहे हो कि आपके एग्ज़ाम चल रहे हैं और आप नर्वस हो, आप क्या कहोगे? माई एग्ज़ाम्स आर गोइंग ऑन एंड आई एम फीलिंग नर्वस। सो ये कहने की बजाय आप क्या कह सकते हो? माई एग्ज़ाम्स आर गोइंग ऑन एंड दैट्स वाई आई एम हैविंग बटरफ्लाइज इन माई स्टमक, इस तरीके से। सो यहाँ पर मैंने सिमिलरली यूज़ कर दिया। देन मैंने यूज़ किया फ्लाइंग कलर्स। इट्स मीन जब आप गुड ग्रेड से अपने एग्ज़ाम को पास आउट कर लेते हो। So it was quite an uphill task for me to manage everything by myself. So in order to manage each and everything, I decided to do all the work related to party in daytime, and in the evening time I decided to burn the midnight oil for my studies. From 8 a.m. I started visiting restaurants and hotels which would not only have an amicable workers but also their fast food item would be mouth-watering. Now I have used a word and that is uphill. Try to use that when you want to say difficult. Difficult again बोली जाओगे तो examiner impressed नहीं होंगे. Totally sure about that. So अभी difficult की जगह पर आप क्या use कर सकते हो? Uphill. ठीक है. Then मैंने कहा burn the midnight oil. Burn the midnight oil का meaning क्या होता है? जब आप hard work करते हो तब अपने use करेंगे burn the midnight oil. देन मैंने यूज़ किया एमिकेबल। एमिकेबल का मीनिंग होता है जब आपने फ्रेंडली कहना होता है। एंड देन आई हैव यूज्ड अ वर्ड एंड दैट इज माउथ वाटरिंग। In the end, I came up with a restaurant which provided all the amenities and even their food was finger licking. And I also even decided to adorn the whole in my own way because I thought the decoration that restaurant would do would not be up to the mark. So I bought some French curtains, balloons, and stickers to embellish the entire hall. Now I have used a word and that is amenities. Maybe you've heard about that. Normally students use that particular word. सो जब भी आपने कहना होता है फैसिलिटीज़, देयर वी कैन से अमेनिटीज़। देन मैंने यूज़ किया लिप स्मैकिंग। ये भी आपने लाइक अपनों इसका पहले ऑलरेडी अल्टरनेटिव कर चुके हैं डिलीशियस का माउथ वाटरिंग एंड सेकेंड अपना अल्टरनेटिव हो गया लिप स्मैकिंग। सो मैंने कहा इवन देयर फूड वर लिप स्मैकिंग। सो देन मैंने यूज़ किया अडॉर्न। अडॉर्न का मीनिंग होता है डेकोरेट की जगह पर अपने यूज़ करते हैं। देन अप टू द मार्क इट्स मीन जब आपने परफेक्ट कहना होता है, गुड कहना होता है, बेस्ट कहना होता है, वहाँ पर अपने यूज़ कर सकते हैं। देन एम्बेलिश। एम्बेलिश का मीनिंग होता है अगेन डेकोरेट। सो अपने डेकोरेट के टू वर्ड्स किए हैं। द फर्स्ट वन इज अडॉर्न एंड द सेकेंड वन इज एम्बेलिश। After completing the party work, even though I was totally shattered, I had to do study so that I would give my best in the exams as well. Anyways, in the end, with God grace, everything went very well and I was over the moon. But at the same time, it was very tiring experience for me to stay swamped all the time. So I have used a word and that is shattered. Shattered mean when you are absolutely tired. There you can use shattered. Then I have used an idiomatic expression and that is over the moon. We use that one when you want to say happy. And then I have used a word and that is swamped. It's mean when you are busy. There you can use it.